Uh, a very good morning to all of you. This is the 14th lecture for the subject Power System 1. So today in this topic, we are going to discuss regarding some important terms which are used for the determination of voltage regulation, line losses, and transmission efficiency. As we had discussed yesterday in the introduction, that for the electrical design of a transmission line, there are three terms which are most commonly used, known as line losses, voltage drop, and transmission efficiency. So these three parameters depends upon the value of three constants of a transmission line known as R, L, and C. So, before proceeding for the today's topic, let us have a quick review on how transmission lines are classified. So, transmission lines are basically classified as short transmission line, medium transmission line, and long transmission lines. So, depending upon the length as well as voltage rating, short transmission lines are categorized. Those lines having the length of less than or equals to 50 kilometers are termed as short transmission line, and their voltage is less than 20 kilovolt. Those lines having the length between 50 to 150 kilometers are termed as medium transmission lines, and their voltage rate is between greater than 20 kV to less than 100 kV. Long transmission lines, their lengths are greater than 150 kilometers and their voltage ratings are greater than 100 kV. So we can say that 11 kV line is a short transmission line, 33 kV line is a medium transmission line, 66 kV is also medium transmission line, 132 kV, 220, 440 kV's transmission lines are long transmission lines. We are easily categorized according to the voltage ratings as well as length of the line. So today in this today's session, we are going to discuss some important terms more clearly. What do you mean by the voltage regulation and the transmission efficiency? Because these two parameters play a very vital role while designing the electrical design of a power system. सो परफॉर्मेंस अगर हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की, ये दो पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. द फर्स्ट वन इज ए वोल्टेज रेगुलेशन and the another thing is transmission efficiency. So line losses we will calculate in the preceding lectures. Okay. So while studying the performance of a transmission line, it is desirable to determine its voltage regulation and transmission efficiency. So starting with the first term, what do you mean by the voltage regulation? So what do you mean by voltage regulation? When a transmission line is carrying current, okay? So there is a voltage drop in the line. ठीक है, जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो होगी तो वी नो दैट देयर इज सम वोल्टेज ड्रॉप्स इन द लाइन. वोल्टेज ड्रॉप क्यों होंगे लाइन में? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एज वेल एज कैपेसिटेंस इन द लाइन. ठीक है, रिजल्ट क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप के कारण क्या होगा? जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी आर. वी आर इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज, वी एस इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज. जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होगी ऑफ द लाइन इज जनरली लेस देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज. मतलब voltage at the receiving end is less than the voltage at the sending end. इन दोनों वोल्टेजेस के डिफरेंस को, ठीक है, इफ इट इज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इज कॉल्ड एज वोल्टेज रेगुलेशन. सो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? एक बेसिकली एक डिफरेंस है बिटवीन द सेंडिंग एंड टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज with respect to the receiving end voltage is called as voltage regulation. कितनी हमने वोल्टेज को भेजा था, सेंड किया था, और कितनी हमारे पास वोल्टेज रिसीव हुई,
कितनी भेजी और कितनी रिसीव हुई, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को विद रिस्पेक्ट टू द रिसीविंग एंड को हमने रेफरेंस माना, दैट थिंग इज नोन एज वोल्टेज रेगुलेशन. So the difference in voltage at the receiving end of a transmission line, जहाँ तो conditions ले लो no load की, जहाँ तो ले लो full load की, between no load and full load is called voltage regulation and is expressed as percentage of receiving end voltage. So this is the formula for mathematically calculating the voltage regulation is sending end voltage minus receiving end voltage with respect to receiving end voltage. अगर परसेंटेज में लेना मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल गिव द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज. सो ऑब्वियसली इट इज डिजायरेबल दैट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन शुड बी लो. डिफरेंस जो है वोल्टेजेस का सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड में, दैट शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल. द इंक्रीज इन लोड करंट शुड मेक वेरी लिटिल डिफरेंस इन द रिसीविंग एंड वोल्टेज. So the second term we are going to discuss is transmission efficiency. So transmission efficiency is basically the ratio of receiving end power to the sending end power of a transmission line is known as transmission efficiency of the line. So transmission efficiency का formula क्या है? Efficiency का simply efficiency का क्या formula रहता है? Ratio of output to input is known as efficiency of a any system or machine. कितनी output generate हुई और कितनी input थी, that will be the efficiency. So transmission efficiency is the ratio of receiving end power, कितनी power receive हुई with respect to the sending end power, multiply by 100, that will give you the value for the transmission efficiency. So रिसीविंग एंड पावर इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड एज, पावर का क्या फॉर्मूला रहता है एसी सर्किट्स में? पावर का फॉर्मूला रहता है पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट. ये रहता है डीसी के केस में पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट. बट एसी के केस में हमें पावर फैक्टर भी इंक्लूड करना पड़ता है, दैट इज cos फाई. ठीक है, एसी के केस में हमें cos फाई पावर फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. P इक्वल्स टू वी आई इज फॉर डीसी ओनली, P इक्वल्स टू वी आई cos फाई इज फॉर एसी पावर. वी हैव टू ऐड द पावर फैक्टर cos फाई. सो रिसीविंग एंड पावर था इसलिए फाई आर आया, यहाँ नीचे सेंडिंग एंड पावर था यहाँ में फाई एस आया. ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा ठीक तरह से लिखना. रिसीविंग एंड के लिए आर यूज करना, सेंडिंग एंड के लिए एस यूज करना, मल्टीप्लाई बाय 100, we will get the transmission efficiency. So here I had explained where VR, IR, cos phi r are the receiving end voltage, current and power factor, while VS, IS and cos phi s are the corresponding values at the sending end. Okay. So we will move ahead with the new topic named performance of transmission lines. Okay. So in this whole chapter we are going to discuss the performance of short transmission line in detail, performance of medium transmission line in detail, and performance of long transmission lines in detail. So in the whole chapter we are going to discuss the performances of short, medium and long transmission line. So I am starting with the performance analysis of the short transmission line. Okay. So in this concept, as I had stated earlier, the effect of line capacitance are neglected for a short transmission line. Okay. The effect of line capacitance are generally neglected for a short transmission line